We're live. Good evening, everyone. Welcome to NAPM's Yuva Samvad. As all of you who've been following the Yuva Samvad series know, the National Alliance of People's Movements has been organizing this weekly series with young comrades from different parts of India who've been part of various movements and various social change spaces. These young comrades have been articulating their experiences and struggle in social change work and in solidarity. Today we have a very significant panel. It's also we are marking the beginning of the Queer and Trans Pride Month. And as many of us know, there is a very rich history of struggle and resistance to queer and trans struggles, both in India and globally, and to the entire Pride. So it is in that context that we thought it would be useful to organize today's session and to listen from some of our comrades from different parts of India on how their experiences of pride has been in movement spaces as queer identified, trans identified people. So we have 4 panelists today with us, and the session would be moderated by Poushali. Poushali is a comrade who is based both out of Kolkata and Mumbai. She is part of various organizations, including Feminist in Resistance, including Forum Against Oppression of Women and Sappho for Equality. And also Poushali is a feminist researcher and activist. Thanks to Poushali for agreeing to moderate this session. She'll also introduce our other panelists, including Anandh from Kerala, Krishanu from Delhi, Tashi from Telangana, and Banu from Tamil Nadu. So welcome to all our panelists, the moderator and others who are listening to this session today. बहुत संक्षिप्त से हिंदी में बता देती हूँ कि हम सभी साथी जानते हैं कि इस महीने क्वीर प्राइड का जो एक बहुत संघर्ष का एक इतिहास है, उस महीने को हम मार्क कर रहे हैं। और इस संदर्भ में और हम सभी जानते हैं कि अपने देश में हो या वैश्विक स्तर पर एक बहुत लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है, जो एक प्रकार से जिन व्यक्तियों के पहचान के आधार पर जो शोषण होती है, उनकी जेंडर और यौनिकता के पहचान और प्रेफरेंसेस के आधार पर, तो उस स्ट्रगल का जो एक्सपीरियंसेस मूवमेंट्स में भी किस प्रकार से साथी फेस करते हैं, कैसे उन्होंने डील किया है, उनका क्या नजरिया है ऐतिहासिक से लेकर आगे तक, क्या वो सोचते हैं, वो आज अपना अनुभव साझा करेंगे। तो सभी का स्वागत है। पौशाली आज के सत्र का संचालन करेंगे और अलग अलग राज्यों से हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी का स्वागत करते हुए आई वुड रिक्वेस्ट पौशाली टू टेक फॉरवर्ड द सेशन। थैंक यू सो मच मीरा। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों को यहाँ पे सतरंगी सलाम, जय भीम और जिंदाबाद। हम लोग शायद यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं वो थोड़ा बहुत फेमिलियर है क्वेर आंदोलन के साथ, क्वेर ट्रांस आंदोलन के साथ, लेकिन और हम सबको मालूम भी है कि जून महीने प्राइड के महीने होते हैं, जैसे मीरा ने कहा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइड का जो सवाल रहा है हमारे बीच में, आंदोलन के बीच में, वो थोड़ा सा पेचीदा सवाल भी है, क्योंकि प्राइड का जो ये प्राइड मंथ जो माना जाता है, जहाँ से शुरू हुआ था इतिहास में, वो एक्चुअली बाहर से था। न्यूयॉर्क के एक ग्रीनविच विलेज करके एक विलेज में जो गे बार था, स्टोनवॉल इन का नाम था उसका, वहां पे एक एक्चुअली पुलिस रेड हुआ। मतलब तभी के दिनों में पुलिस रेड बहुत कॉमन था ऐसे गे बार्स में, लेकिन जो स्टोनवॉल इन में हुआ और उसके बाद जो चलता रहा पुलिस रेड और पुलिस के साथ जो गे ट्रांस लोगों का जो संघर्ष चलता रहा, वहां से एक्चुअली एक एक्टिविज्म का शुरुआत हुआ है, जहां से हम स्टोनवॉल, जिसको हम स्टोनवॉल रेबेलियन बोलते हैं, उसी नाम पे पहचानते हैं। तो वो जो शुरुआत है जून महीने में और जो बाहर में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, वही एक शुरुआत है जो इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि
30 साल बाद, मतलब ये हुआ था 1969 में अमेरिका में, और इंडिया में जो फर्स्ट प्राइड मार्च हम जिसको कह सकते हैं वो 1999 में हुआ, मतलब 30 साल बाद हुआ, कलकत्ता में हुआ था। और उसके बाद एक्चुअली उसके साथ साथ बहुत सारे शहरों में 1999 के बाद प्राइड मंथ, ऐसे प्राइड बहुत सारे, ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज है वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ, होता रहा एक्चुअली। लेकिन ये प्राइड, मतलब प्राइड को हम किस रूप से, किस नजरिए से देखें, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि अभी जो हम जितने सारे लोग, मतलब जितने सारे यंग लोग जो स्कूल में और कॉलेज में जैसे प्राइड को समझते हैं, जैसे प्राइड का मंथ और प्राइड मार्च जैसे सेलिब्रेटेड होता है ज्यादातर शहरों में, वहां पे जो सेलिब्रेशन का जो आयोजन है, जो जिस तरीके से सेलिब्रेशन किया जाता है, वहां पे एक चीज तो बहुत साफ नजर में आता है कि बहुत, उसमें बहुत पैसा है, उसमें बहुत फंडिंग होता है, उसमें बहुत मटेरियल, उसको लेकर एडवर्टाइजिंग होता है, उसको लेकर अलग अलग मार्केट भी तैयार हो गया है। जो प्राइड के सीजन में तुम क्या प्रोडक्ट बेचोगे, क्या प्रोडक्ट खरीदोगे, जो मेन स्ट्रीम मार्केट है वो भी, मतलब इंडियन मेन स्ट्रीम मार्केट में भी थोड़ा एक एक तरीके से प्राइड का जो प्राइड के बारे में मार्केट को तो पता ही है, और वो भी सामान बेचना शुरू कर दिया है शायद। मैं पिछले 2 साल की बात नहीं कर रही हूँ, वो पैंडेमिक ईयर्स था, लेकिन उसके पहले की बात कर रही हूँ। लेकिन ये जो प्राइड का एक अलग मतलब जो मार्केट जो हमने देखा है कि अगर हम 8 मार्च का भी जो विमेंस डे होता है उसका भी सवाल देखें और प्राइड मंथ का भी देखें, तो मार्केट एक तरह से उसको कोऑप्ट करने का कोशिश करता है। और हमारे बीच में, मतलब जो क्वेयर ट्रांस कम्युनिटी है और जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, कलेक्टिव्स है सारे हमारे, मतलब इस देश में, वहां पे शायद अगर हम इतिहास में देखें, हिस्टोरिकली देखें, तो ये नजर में आएगा कि कुछ अलग कोशिश भी था कैसे हम प्राइड को देखें। और प्राइड का जो मतलब है वो शायद बहुत सिर्फ सेलिब्रेशन का नजरिया से हम नहीं दे सकते हैं उसको। एक्चुअली जो जिसको हम स्वाभिमान कहते हैं, जिसको हम सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, प्राइड मतलब डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये मतलब से ही एक्चुअली प्राइड का शुरुआत हुआ था। क्योंकि डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वियर ट्रांस लोगों के जीवन में। क्योंकि हर मतलब जो समाज में बहुत सारे सालों से, बहुत सारे सेंचुरीज से जो जो जिस तरीके का जो हिंसा और उत्पीड़न इन लोगों को सहना पड़ा, और जिस तरीके का स्टिग्मेटाइजेशन हुआ है, अगर उसको एक तरीके से तोड़ना है, अगर उसको एक तरीके से रिक्लेम करना है, तो वहां पे प्राइड मतलब डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट का सवाल सबसे आगे आता है। तो अगर ये है प्राइड का जो असलियत, जो मीनिंग है, तो अगर हम देखें कि 1999 से जब ये शुरू हुआ, और हम कह सकते हैं कि एलजीबीटी आंदोलन जो है वो भी मिड 90s से ही शुरू हुआ था इंडिया में। तो और अभी 2022 है, मतलब लगभग 20 साल से ही ज्यादा ही है। इन लास्ट 2 डेकेड्स में जो भी संघर्ष रहा है एलजीबीटी कम्युनिटी का, उसमें ये बहुत साफ साफ नजर में आ रहे हैं कि एक विजिबिलिटी बन चुका है। हाँ, मतलब ये विजिबिलिटी बहुत सारे सेक्टर्स में दिखता है। ये विजिबिलिटी पे खास तौर पे जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल स्पेस में है, उसमें तो है ही। और आज का जो युवा लोग है वो भी ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन, जो लर्निंग जो उनका होता है, अगर स्कूल में ना भी हो, वो बहुत ही इन्फॉर्म्ड रहता है, क्योंकि उनको सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है डिजिटल स्पेस से। तो एक ये जो विजिबलाइजेशन है एलजीबीटी कम्युनिटी का, और डिजिटल स्पेस में है,
मार्केट एक तरह से विजिबलाइज कर रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम कानूनी सामाजिक तौर पे देखें तो जो ये डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ आईपीसी 377 हुआ है 2018 में, और उसके पहले जो नालसा जजमेंट 2014 में आया था, और उसके बाद सीरीज ऑफ डिस्कशन और कंसल्टेशन के बाद जो ट्रांस बिल्स के वर्जन्स आए हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम था और उसको लेकर भी क्वेयर ट्रांस कम्युनिटी ने बहुत काम किया। लेकिन जो भी फाइनल जो ट्रांस बिल बना और 2019 में वो एक्ट भी बन गया, और अभी हमारे पास रूल्स भी है, ट्रांस एक्ट का कुछ रूल्स भी है। तो ये सब हमको ये बताते हैं कि एक तरीके से सरकार मतलब एक तरीके से कोशिश, उनका ये भी कोशिश है कि कैसे हम एलजीबीटी समुदाय को मेन स्ट्रीमाइज करें, हमारे क्या क्या उसको दे क्या ना दे, कैसे उसको ये समझाए कि आप भी मतलब आप इक्वल सिटीजन तो हो नहीं, इक्वल सिटीजन का कोई जगह ही नहीं बना अभी तक, लेकिन हम आपको जानते हैं, हम आपको शायद कुछ जगह देने के बातचीत चल रहा है, लेकिन हमारा जो मर्जी है उसी उसी के दौर पे हम आपको राइट्स मतलब राइट्स में इंक्लूड करेंगे या ना करेंगे, राइट। तो यहाँ पे शायद मैं ज्यादा बातचीत मतलब इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस छोड़ना चाहती हूँ यहाँ पे, ताकि बात जो स्पीकर्स है वो जब बात करेंगे वो पकड़ के बात कर सके, और हम बाद में जब जोड़ेंगे सब स्पीकर्स के बाद वहाँ पे कुछ डिस्कशन बन सके। तो मुझे लगता है कि अभी का जो ये क्वेयर एंड ट्रांस जर्नीज ऑफ प्राइड इन मूवमेंट स्पेसेस इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है, वहाँ पे ये 3-4 क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। एक तो है कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए हम आज के दिन में जो पैंडेमिक हुआ, जो लॉकडाउन हुआ, और उसके पहले जो हिंदू राज का और हिंदुत्व पॉलिटिक्स का जो एक राज चल रहा था, उसका भी जो इफेक्ट हर एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी पे हुआ था, और वैसे क्वेयर ट्रांस कम्युनिटी के ऊपर भी हुआ है। तो उसका क्या उसका जो हिंसा और उसका जो डायरेक्ट जो इफेक्ट क्वेयर ट्रांस लोगों पे हुआ है, वो शायद हम थोड़ा जब लोकल लेवल पे बात करें और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो काम है या लोकल जो कम्युनिटी के तौर पे काम है, दूसरा जो आंदोलनों से भागीदारी का काम है, एक साथ जोड़ के काम करने का काम है, वहां से शायद निकल के आएगा। तो एक है कि आज के माहौल में आज का जो हिंदुत्व जो हिंसा और राजनीति है, उसका उसी महल में हम कैसे देख रहे हैं, ये हमारा हालात कैसा है। और उसके साथ साथ शायद ये भी बहुत जरूरी है कि ये बहुत नजर में आ रहा है कि क्वेयर ट्रांस लोगों का एक तो मार्जिनलाइजेशन है, मतलब मार्जिनलाइजेशन है, और बहुत शुरू से है, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ कम्युनिटी है। यहाँ पे बहुत सारे कास्ट और माइनॉरिटी मतलब लोअर कास्ट और माइनॉरिटी रिलीजियंस के लोग भी हैं। तो ये जो पैंडेमिक और लॉकडाउन के समय पर जो आर्थिक एक समस्या है, आर्थिक जो प्रिकैरिटी हमको नजर में आए, वो हम कैसे संभाले, और अभी भी उसका जो एक्चुअली उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है, वो हम क्या देख रहे हैं वहां पे। और सिर्फ ये आर्थिक नहीं है, सामाजिक आर्थिक जो हिंसा बढ़ गए और जो प्रिकैरिटी बढ़ गए, उसको हम कैसे देख रहे हैं। और इसके साथ साथ शायद हम ये भी थोड़ा बोल सकते हैं कि हमारा जो अगर हम किसी स्टेट के साथ कुछ बातचीत में गए हैं, वो स्टेट लेवल जो कोशिशें रहा हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स में जो ट्रांसजेंडर डेवलपमेंट बोर्ड बनाए हैं, बहुत सारे राज्य में ऐसे हैं। There are some transgender development boards in some states of India.
and what have been the experiences there, and what do we think, like what is the give and take politics that each of this government is trying to build upon, and there may be some positive experiences from there also. और इसके साथ साथ शायद how do we think of what have been the experiences of working with other communities and being part of different movement spaces. मतलब ये नहीं कि क्वेर आंदोलन क्वेर आंदोलन ही है और उसके साथ किसी और स्ट्रगल का, किसी और आंदोलन का भागीदारी नहीं रहा. हम अगर रिसेंट समय पे भी, if we take examples of the NRCCA movement, if we take examples of different other movements that have happened, and especially state repression that many communities have been facing in recent times, we can see that queer trans community have been directly under attack in those environments. So वो भी वो जो एक राजनीतिक सिचुएशन है उसके बारे में भी थोड़ा बात करना पड़ेगा. तो और इसी अगर हम ये सब चर्चाएं कर सके तो हमको एक्चुअली जो एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस का जो सवाल है, जहां से हम प्राइड के बारे में सोचते हैं, प्राइड मार्च करते हैं और बहुत सारे कुछ करते हैं, तो उसका हालात क्या है आज की दुनिया में, आज की राजनीतिक जो वातावरण है वहां पे प्राइड का एक्चुअली मतलब क्या है, वहां पे लीगल कानूनी रिकॉग्निशन क्या है और सामाजिक रिकॉग्निशन क्या है, उसका एक थोड़ा सा शायद आइडिया हमको मिलेगा. तो हम शायद अभी शुरू कर लेते हैं. अभी हमारे साथ आज 4 साथी हैं, जैसे मीरा ने इंट्रोड्यूस कर दिया था. हमारे साथ अभी जो बात रखेंगे हमारा फर्स्ट स्पीकर आनंद सी राजप्पन. आनंद सी राजप्पन. Sorry, a small intervention. Grace requested, because her boarding time is starting in 30 minutes. So she requested if she can speak and if that's okay. Yeah, then maybe Grace will go first, right? Yeah, and then we do, because I just got the message. So which is why okay, fine. She has joined? Yeah. Yeah, she's joined. Okay. So we'll have Grace first and she will speak. So I'll just introduce her. Grace Banu is an anti-caste and transgender rights activist from Tamil Nadu, known as the first transgender person admitted into an engineering degree. She has been actively involved in advocating for rights of trans persons at the national level and in Tamil Nadu. During the months of pandemic, she has been working incessantly to ensure that trans-starved people who had lost their means of sustenance and their livelihoods in Tamil Nadu were able to access basic necessities. Grace trans persons cooperative भी organize किया है district level पे. She is founder of the collective Trans Rights Now. She has been organizing for Dalit and transgender rights and demanding, along with other transgender people, for reservation based on gender identity as well as caste. So, Grace, you can take over now. Yeah. Yeah. Hey, thank you, Poushali. I'm so happy. Yes, so happy Pride Month for all the people who are joining here. And I'm so happy, my friend Meera and Tashi and Anandh. So we are all after long month, we are gathering here. It's like it's such a great opportunity, and thank you so much creating this space to talk about the queer, trans and queer for this Pride Month. So yes, this is so what we need. So yes, we need a space like this. So this is the safe space for us. So we need a safe space like this, because for us it's a pride. So pride
all the people are, celebrating, and we are enjoying that. We are sharing our stories. We are doing so many conferences. We are, mm, um, uh, we are so many events, organizing the event, and we are all celebrating everything. But from my point of view, what about the people who doesn't have any kind of privileges to access this kind of celebrations? So are we need to, are we focus on those kind of people? Are we reach out those kind of people? What is pride and why we are celebrating this pride? And the people who doesn't know about, the pride, what is pride, and why these people are celebrating that. For example, the Dalit community and Adivasi, tribal community, trans and queer persons, and I mean the people who are having so much of fear, who doesn't have any kind of visibility space, like Muslim trans, Muslim queer persons. It's not a safe space in this country. So we are feeling it's like a insecure space. So how do we celebrate, and how do we celebrate this pride, and how do we know about what is pride? So these people, again, pride it's almost over, and year and year, it's like occupied by the people who are having privilege. And the people who doesn't have any kind of privileges, those people are facing so much of discrimination, so much of violence on that pride month also. Every day they are facing, but within that, the June month. So June month also, they are facing so much of discrimination, violence, and so many atrocities happened, and so many murders are happened during that time also. Are we focus on those kind of people? And for this Pride Month, I mean, every Pride Month, we are not focusing on the people who are lost their livelihood the whole year. I mean, the people who are killed by the civil society, the people who are committed suicide. So many suicide. I mean, the persons we are. So many queer persons, trans persons we are, but we are not. Why? Because of the discrimination. So here, again and again, the pride is it's people who are having caste privilege, class privilege. Those people are celebrating us, enjoying us, sharing their life. Love is love, whatever they will say. But they're not focusing on the caste issues. They're not talking about the caste issue. They are not talking about the rise. The people, we are excluded from those kind of umbrella. So the intersectionality issues, when we talk about the intersectionality issues, do we have any kind of accessibility for the person with the disability? So the pride space, it doesn't have. Most of the pride space is like a completely privileged people. So they are celebrating, they are sharing their joy, and they are sharing their love. They are having so much of everything, so much of privilege to everything. But for us, particularly Dalit Bahujan, Adivasi, tribal community, trans and queer persons, and the Muslim queer persons, and the people who are in the working class queer persons, so we don't have a space to, we don't have a visibility space, show our identity. So we don't have a safe space to prove to create a safe space. So we need to focus on to create the safe space for all of them. So pride should be in equality. Pride should be, you know, for everyone, because everybody have the rights to celebrate their rights. Everybody have the rights. So the people who wants to fighting for their rights. For example, now the Pride Month. So every time when we talk about the reservation rights,
So when we raise the reservation rates, very few amount of people only, we are getting a response from the within our own community also. So that's too bad. So the pride in Tamil Nadu, particularly, we are celebrating self-respect pride. So in that, it's like we are demanding so many issues to the government. But across the world, we are celebrating the pride. So the various kind of issues are there. So we need to focus on those issues. Yes, A and B. The pride should be the celebrate. Yes, it's a celebration, but that celebration space should be for all, not only occupied by the privileged people. It should be for all the people. It should be form like it should be have a equality. But in the pride, we don't have in India, particularly in India, we don't follow the equality. I feel yes, it's not for the say. It's not safe for the trans people. It's not safe for the queer persons who are doesn't have a caste privilege, class privilege, any kind of privileges. So it's completely occupied by the, of course, Savarna people. And they are celebrating. They are having debating. They are there. They are sensitizing and everything. But they are excluding the people who doesn't have any kind of privileges. So it should be in equal. So and that is the safe space. But most of them doesn't feel it's the pride in India. It's not. We don't feel any safe space here. Yes. So the pride should be equality. Thank you. Thank you, Can Grace. you hear? Hello. Yeah, thank you so much. Yeah. Do you have little time? Can I just ask you to comment a little more? Okay. So just following what you have just elaborated upon, that how we need to create more safe space, and how celebration, whatever celebration, and whether it is Pride Month or anything else, how it is only accessible to a few number of people, even maybe only the dominant caste class people in the queer trans community. So it will be great if you can actually share a little bit about the collective you have set up, Trans Rights Now, and maybe also the concept of reservation, the horizontal reservation that you talk about. So I'm a founding director of Trans Rights Now Collective. So the Trans Rights Now Collective, it's a collective, the member of so many trans person who are in the our main priority is for the Dalit, Bahujan, Adivasi tribal community, Muslim, trans and queer persons. And we are working for all the trans rights and the queer rights across India. And with we are doing so many campaign, like as you said, the horizontal reservations are, and that's our long-term campaign. That's when we have the reservational rights. So for me particularly, I'm believing the reservation is only tool to create a it's only tool to uplift the trans community livelihood, the queer community livelihood. Otherwise, it's like it's like empty. It's all others, all the things are, it's like a welfare schemes, but welfare schemes are different, rights is different. So we are asking the rights, and that is reservation rights. And when the trans persons are having separate kind of reservation rights, separate reservations, in the sense it's not in the vertical reservation, it should be in the horizontal. So when we say the vertical reservation, it's like
male, female, transgender category reservation. So we don't want, we want the horizontal reservation because so many years we are facing discrimination in the name of caste and gender from the civil society and within our own community also. So we don't have a space to get the educational opportunity, employment opportunity in the public space. So if all the people should participate in this kind of spaces, reservation is the only solution. So we want separate reservation and that should be in horizontal. So that's our campaign. So we are doing so many years. Yeah, we are advocating the parliamentarians. We are creating so many supporters, but always the people who are having privilege, our own community also, they are keeping silent because they're not focusing. Yeah, that's their caste mentality. That's their caste privilege. They're not ready to support the caste. Yeah. So yeah, this is our work, and we are doing. And the people who wants to continue their education, the people who wants to get a government job, so we are educating them, encouraging them if they face any kind of legal issues. Uh, so it's like any legal issues. So we are uh, uh, giving legal guidelines to them and the legal battle. We got so many positive judgments. So we are fighting with the to get our rights, and that is the reservation. Yeah. And what has been like presently? What is the response of the state government, and what has been the experience of working there? So center and state government, it's like particularly in Tamil Nadu state, it's a You went mute. Yeah. part of the India. The people are so much of progressive, but whatever they said, but they are not ready to give the reservation. And except Karnataka, they have 1% reservation in the education system. But in Kerala, so many schemes are there, but they are not provide the reservation rights. I mean, and in Tamil Nadu also. So Tamil Nadu is the most progressive in the trans histories, but they are not ready to give the reservation. And so we are working across, and the center is, going to put all the trans people in the OBC category reservation. I mean, the OBC category, but being a Dalit, how do we access the OBC? Right. And it's not, it's completely injustice for us. It's not social justice. So so we are doing a campaign against that. We need separate reservation, and that should be in the horizontal. Otherwise, the people again and again, the people who are having caste privilege, class privilege, those people only access all kind of spaces. The people who doesn't have any kind of privilege, those people, they definitely doing decking and sex work. Yeah. 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 So. Yes. Thank you, Grace. Thank you so much for Yes, thank you. elaborating on the work and also making it very clear that how difficult it becomes for oppressed caste people, oppressed caste, trans and queer people to access whether it is education, health, employment opportunities, as well as even to celebrate, like to be there in the pride, or to just be there on the street to celebrate, or also to mingle across communities. Um, so, yeah, Mira, do I need to do Hindi brief, or do I move to the next speaker? Maybe just 30-second, 1 minute Hindi. Just the Okay. main 2 points which Grace said, and then to Okay, Anandh. okay, Yeah. okay. So ग्रेस ने जो 2-3 मुद्दा के ऊपर बहुत स्ट्रेस किया, वो ये है कि एक है कि कैसे जो प्राइड का जो सेलिब्रेशन होता है और हुआ है,
वहाँ पे कितना जो दलित ट्रांस क्वेयर लोग हैं, जो मुस्लिम ट्रांस क्वेयर लोग हैं, जो दूसरे एथनिसिटी के ट्रांस क्वेयर लोग हैं, वो कैसे हर टाइम वो एक्सेस नहीं कर सकते ये सब स्पेसेस। वो प्राइड के सेलिब्रेशन हो और ये कुछ अलग हो, यहाँ पे जो सेफ स्पेस हमने बनाए हैं वो भी जो सेफ स्पेस है, हम कितना वो सेफ स्पेस को कितना और भी जो लोग हैं जो एकदम एक्सेस नहीं कर सकते इन सब स्पेसेस को, जो शायद उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बहुत दूर दूर है, तो वहां से कैसे हम लोगों को जोड़ पाए, वो एक हमारा फोकस होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उनका जो काम है वहाँ पे वो रिजर्वेशन जो हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन है उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब हम सिर्फ हमारे देश में अभी सिर्फ वर्टिकल रिजर्वेशन का एग्जांपल है, जहाँ पे हम ओबीसी, दलित ऐसे अलग अलग से सेपरेट रिजर्वेशन और मैन मतलब जेंडर वाइज या कास्ट वाइज ऐसे हम रिजर्वेशन करते हैं। लेकिन अगर हमको असलियत में लोगों के पास पहुंचाना है, अगर हमको अपलिफ्टमेंट में, इकोनॉमिक सोशल अपलिफ्टमेंट में काम करना है, तो हमको इंटरसेक्शंस पे काम करना पड़ेगा और वहां पे हमको एक्चुअली हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन की बात लाने पड़ेगी वहां पे। तो यहाँ पे ग्रेस तमिलनाडु में एक्चुअली उनका बहुत सारा काम अभी भी जारी है स्टेट गवर्नमेंट के साथ और वहाँ पे लोगों के साथ, सिविल सोसाइटी में और ऑब्वियसली कम्युनिटी के अंदर। हम अभी हमारे जो सेकंड स्पीकर है उनको बुलाएंगे यहाँ पे बात रखने के लिए। I'll call actually Anandh to present his experiences here. Anandh C. Rajappan Yes, is a yes. Dalit. Sorry. Yeah, please. Yeah, is a Dalit intersex activist from Kerala and member of Transgender Justice Board Kerala. वो सहयात्रिका में काम किए हैं और वहाँ पे वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पोजीशन पे थे। उसके बाद वो उसने कॉन्टेस्ट भी किया लोकसभा इलेक्शन में एज एन इंटरसेक्स पर्सन। currently he is an associate fellow at Intersex Asia. आनंद, हम आपको हमारे बीच में लाके बहुत ही खुशी है हमारा। आप कैन यू प्लीज प्रेजेंट, कैन यू प्लीज शेयर व्हाट? Yeah. Thank you. Hi everyone, Jai Bhim. My name is Anandh. I am from Kerala. First of all, I would like to wish you all a happy Pride Month. And of course, thank you for sharing this opportunity for me. I'm really glad to be here. The thing I have to share is that as you all know, Kerala is the first state to implement a transgender policy after the Nelson judgment. But there are still uh, it's very problematic. I don't know am I being critic or not, but I have to say this because I think this is right. There is a huge history of queer movement in Kerala. There is a 20 years of struggle and pride movement. Even I can say that I am also a byproduct of this pride movement, because I am a beneficiary, because when I come out as an intersex person, I got a huge acceptance. I got a huge support from many individuals. So before this policy, Kerala has a pure movement history. Sahayatrika has done many things before 20 years. Before 10 years also, Sahayatrika has come up with pure pride parades in Kerala, and female sex workers were there, and other human rights activists were there. There is a very large alliance of human rights activists, feminists, sex workers, and queer people also. It's a 20 years of history. So the after the policy came, things have changed a lot. Government has come up with um,
it's government is providing funds for TG welfare, transgender welfare, intersex welfare, but after the policy, there has come up a transgender justice board and also a transgender cell. But still, it's very problematic because government is not providing what we need. Because after the policy came, the thing happened was uh, only they are accepting still the transgender people. They are not accepting the wide spectrum of LGBTIQ. They even don't understand other communities. When it's when a queer person is coming out, or when two queer people are coming out, they start to live together. It's becoming a crisis in Kerala. It's becoming a crisis. There is no government support for managing this crisis. There is no shelter homes. Only we have is the some activist support and some of their efforts. And still after this Transgender Persons Protection of Rights Act came, even the intersex people, they if they want to change the name and gender assigned at birth, they have to undergo surgery. Even the intersex people also have to undergo surgery to change their name and gender in certificates, all the documents also. And the struggle of intersex people remains the same. The struggle of transgender people still remains the same. There is no support system. There is no, still there is no, families are accepting, families are being very rude, very society is still not supporting any kind of pure movements or pure people. Government is not supporting. Whenever every situation when a pure people come out, or they come out, it's a some kind of what crisis. It's still being crisis in Kerala. So after the transgender policy, the thing happened was the number of surgeries happening in Kerala has increased. The number of trans people getting surgeries. We know that there are no guidelines for gender affirming procedures in India. So I think you all know that Ananya Kumari Alex, a transgender woman, has committed suicide in Kerala. After her suicide, we have come up with an action committee, and we have done a fact finding. And the fact finding report says that a severe case of medical negligence has happened to Ananya. There is no, they haven't undergone any guidelines for the surgery. They have, when Ananya came, they hello. Yes, Yes, Anandh. we can hear you. Yeah. Am I audible? Yes. You're audible. Yeah. Yeah, the thing I was saying, that Ananya committed suicide, and she had a clearly a medical negligence case. So the still after 20 years of activism and everything, Kerala has come up with a policy that there is a support mechanism, but still the struggle is the same. People are suffering from problems from family, problems from society. There is no support mechanism for all. There is no shelter home for everyone. So the development is in papers. There is no development for the community. Community is still in the streets. So the thing I felt is that we lost the alliance with these movements, Dalit movements, pure movement, Dalit movement, pure movement alliance, and the sex workers movement, and also
the thing I strongly demand is this alliance has to come. These all rights movement has to come. The pride parade has to happen. It's necessary to be we have to represent ourselves, because still the things and the struggles are the same. So the pride is very important. I think that the alliance is very important. So after this Ananya's fact-finding report, we have approached the government to create these guidelines. We have advocated for a community meeting and expertise meeting. So we are demanding to the government, also to this NAPM movement. I seek support from these alliances and this Dalit, pure disability rights. Every movement has to come in alliance, and the pride has to be happen, and to be happen, it has to be continued. Yeah, that's it. Thank you so much, Anand, for sharing your experience in Kerala. And I think you have actually raised very important points regarding how, I mean, what has been actually the development, whether there has been any development at all, and what actually this Trans Act and the policies or the Transgender Development Board means, and how it has been only actually it has, one is, as you say, that the development is in papers. सिर्फ पेपर में डेवलपमेंट दिख रहा है और उसके साथ साथ also कुछ And the funny categories. thing is that the first development came in Kerala was there was a separate cell for transgender people in the jails. It was the first development came. In the jails. Yeah, and the thing is, government is spending money for doing surgeries on transgender people. The most of the money goes to the surgery. I don't think the surgery is not the mandatory thing. We need education. Yeah. We need employment. We need housing. Yeah. We need equality. The basic human rights are denied, and they are spending a lot of money on other things. Exactly. So wherever the actual development is needed, access to healthcare, access to actually public healthcare, like subsidized healthcare, access to and also the mental health also. Mental health, including mental health, access to schools and colleges, and definitely employment initiatives. There is no work there, and also the kind of, so I think one is, there has been, in a way, that is what I was trying to point out at the beginning, that the visibility that has happened, what kind of visibility is that? It is maybe that people have come to know that people have, in a way, politically correct manner, they accept there are queer trans people, and also the state and the market also create that environment. But the real there is no scope for equal citizenship, because legally and policy wise you are not recognizing queer and trans people. Yeah. The very positive thing is that after this policy came, the migrated transgender community has come back to Kerala, and they come back, but they are not getting the basic human rights they need. They are getting visibility. They are getting when in Kerala, when you meet a transgender person, the first question is that, have you done your surgery? It's from the first question. But if you do surgery, then only you are actually, the authentic trans person. And this category of the authentic trans person is actually being propagated by the state, basically. Yes. That is how it is happening. Yeah, I think we can build on the discussion as we move to our next speaker.
I'll just try to Yeah, put. I have to say that please. I'm just leaving right now. I am not leaving the Huh. meeting. I will be online. Okay. I still continue to join, but turning off my camera. Okay. Thank Yeah, you. so you will Thank be you. there during the discussion, right? Yeah. I will be here. I will be here. Thank you Okay. all, Okay. Jai Beam. हाँ, thanks आनंद. बहुत ब्रीफली मैं थोड़ा सा जो बात रखी है आनंद ने उसको मैं कोशिश करती हूँ हिंदी में थोड़ा बताने के लिए. उन्होंने जो कहा कि एक तो है केरला में बहुत रिच हिस्ट्री है क्वेयर ट्रांस मूवमेंट का, और वो भी उसमें ही जो बेनिफिट्स है, मतलब जब पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ वो जो जुड़ गई उसके बाद उनका बहुत सारा रियलाइजेशन हुआ और वो एक अलग तरीके का नजरिया बना. और वहाँ पे ही जो हम बहुत सारे हम जो क्वेयर ट्रांस लोग हैं वो जो एक्चुअली फैमिली को छोड़ के और जो नेटल रिश्तेदार हैं उनको छोड़ के बाहर आते हैं और कम्युनिटी के साथ शायद कुछ अलग एक रिश्ता बनाते हैं, और शायद कुछ कुछ हिस्सों में वो कम्युनिटी हमारा परिवार बन जाते हैं. तो केरला में जो ट्रांस बोर्ड है और जहाँ पे आनंद एक्चुअली मेंबर है, वहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो ट्रांस एक्ट और रूल्स के बाद जो स्टेट लेवल पे जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ यही है कि हम डॉक्यूमेंट्स में जो चेंज, जब भी एक्चुअली अगर हम ट्रांस एक्ट को देखें या जो नालसा वर्डिक्ट में जो ज्यादातर पूरे खुलेआम से लिखा था कि one can opt for there will be self determination of gender. मतलब surgery is not the main crux of identifying as a trans man or as a trans woman. सर्जरी की जरूरत नहीं है अगर हम खुद को कुछ किसी भी जेंडर आइडेंटिटी में अगर हम एक्सप्रेस करना चाहे तो. लेकिन जो जमीनी तौर पे जो लड़ाई चल रही है वहां पे यही सच्चाई में दिखा जा रहा है कि सर्जरी हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये सिर्फ केरला की बात नहीं है, ये हर एक स्टेट में है जहाँ पे सर्जरी को बहुत ज्यादा मायने दे जा रहा है. और हमको ये बहुत मतलब एकदम क्लियरली मालूम है कि स्टेट मतलब पब्लिक हेल्थ केयर हो या प्राइवेट हेल्थ केयर हो, दे आर जस्ट ट्राइंग टू रीप बेनिफिट्स, दे आर जस्ट ट्राइंग टू रीप मनी out of surgeries and all the trans healthcare that trans people need to access. तो ये एक लड़ाई जारी है. और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी डेवलपमेंट एक्चुअली जरूरत है, जो शिक्षा में समान अधिकार, शिक्षा में एक्सेस, हेल्थ केयर में एक्सेस, एम्प्लॉयमेंट की जो अलग से इनिशिएटिव जरूरी है, उस तौर पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है. जो शेल्टर होम्स की जरूरत पड़ता है, जो अलग से शायद एक पब्लिक हाउसिंग या एकोमोडेशन की जब बात आती है तो वहाँ पे स्टेट एकदम साइलेंट हो जाता है. तो ये सब मुद्दे आनंद ने उठाया है और बहुत क्रूशियल मुद्दा है ये सब. हम अभी हमारा जो नेक्स्ट स्पीकर है कृषानु, उनके साथ बात करेंगे. कृषानु खुद को ट्रांस नॉन बाइनरी पर्सन के रूप में आइडेंटिफाई करती है और वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ रही है, MA इन सोशियोलॉजी. Krishanu is also working in sexual and reproductive health rights. I'll just welcome Krishanu and ask her to present and share what she wants to share with us. Yeah. Thank you, Poushali. I hope I'm audible. Somebody in the chat can let me know. Okay, thank you, Tashi. So, yeah, thank you so much for that. Keep the microphone a bit closer to your mouth. Oh, is this better? Yeah, this is better. Okay. So,
Yeah, thank you for that introduction. And it's been great listening to Grace and Anand before me. And I will reiterate on some of the points they've already made. So, yeah. Uh, y- so, moving on, like, I will, as Poushali also mentioned, I'm a student at the Ambedkar University, Delhi. So I will like to place myself in that space and try to explain to everyone here, what are the challenges, let's say, I face as a trans non-binary person in accessing a public space like a university. So first of all, I think I'm not sure, but I can only take a guess is that I am the only. Krishanu, sorry to intervene. Please keep the thing closer to your mouth. Okay, wait a second. I will. Better. Yeah, this is better. So, Okay. Okay, I'll just remove this. I hope whatever I said was clear. So what I'm trying to do here is that I will place myself in let's say, how I experience a day in my life in trying to access a public space like the university, and what that means for me, and what that then means for a trans person in being able to access a public space. So first thing that I do after getting ready, like I do right now, like, I have gotten ready a bit. And then after I do this, the second thing that I need to do is go outside my house and take a transportation till my university. Now, this entire duration of transportation becomes very important for me, is because I have limited options because I can't afford anything personal or private transportation. And that's why I have to rely upon public transportation like the metro, which is available here in Delhi. And secondly, the bus services, which is the Delhi Transport Corporation, DTC services of bus. So in both these spaces, I have to travel every day. So while I'm traveling, what happens is that the moment I reach a metro station, the first thing that I have to do is choose which side am I going to enter the metro station from, which is that, let's say they have only men's section and the women's section. So you have to keep your luggage and go from this one security check or the other security check. And security check not only at metro, but other places also are like this all over our country. Largely, there's hardly any place where there's a gender neutral security check. There's always segregation in how security check happens. On most days, I take a call depending on what I appear as and not what I feel as, right? So if I'm appearing as not a woman and looking somewhat like a man, I'll go from the men's section. And even when I do that, I get stares. And then, there will be a moment of pause from the person who's doing the security check, who look at me and be somewhat surprised. And I have to cater to their surprise, this moment of anxiety around everybody else. Everybody else, even behind me in the queue and in front of me, they're wondering why is this person here. And the same thing happens if I go from the women's section on days that I'm not looking femme enough, and I'm not really sure what that means. But this social passing as certain woman or man needs to happen for me to be able to access these spaces. There have been multiple instances where I have had to, there were multiple instances that I've had to, like, I was stopped and asked, Aapka naam kya hai? What is your name? As to establish my gender from that name. Oftentimes when I'm also wearing, let's say, a sari or a dupatta, then I'm asked to remove it to show if I have like breasts or what is happening there. So things like that happen very often, and it's mostly very humiliating and invasive in ways that how that has to be done. And definitely it's a part of my daily, so definitely it doesn't hit as that one big thing, but there's so much anxiety that is getting collected in my body, and the day goes on, right? So then one thing is this. Now second thing is the bus. So in Delhi, the DTC has made the entire travel for women free. And that is a wonderful thing to hear and know and talk about, except it's very tricky as a trans person to access that service. I always go into the bus, and how it operates is that you enter a bus
and then you still go and ask for a ticket, and they will give you a ticket which is pink in color. That is also quite funny. That ticket is pink in color, and you're supposed to carry it, even though you're not paying anything. You're supposed to carry that ticket, and that ticket is not only simply, I don't even understand why it's there in the first place, but even if it's there, I really don't think it's simply a piece of paper which is pink in color. It is to say that I, as a person, feel entitled enough to be able to claim this ticket to womanhood. Because they're not taking money for me to travel in the bus, right? So this ticket is not for me to travel in the bus. This ticket then is my ticket to womanhood. And then the question is, who can claim it? Can I claim it? And then if I say that, you know, if I'm not presenting as femme and I claim that ticket, then what will happen in this public space where other people are there? And then also gatekeeping is happening, who can have it, who cannot have it. Maybe this police personnel there is like, no, you can't. Then what do I do? So far, it hasn't happened also because I avoid traveling via the bus, simply because of the anxiety that, you know, what happens one day when people don't agree that I'm a woman in a social setting. So yeah, this entire pink ticket to my womanhood is something that I have sometimes been able to claim, but I have failed at multiple times to be claiming my space as a woman while going through security check in the metro. Another thing while you're traveling in a metro in Delhi is that there's a women's coach which is reserved in the first section of the train. So even within that space, I feel very scared whenever I'm entering. So this is a general fear that I have whenever I'm entering women's only space. So men's only space anyway I don't go to, or I don't find myself in those spaces. But in public spaces, when there are women's only spaces, they are more scarier to me, because then to be, and then, you know, to be a perpetrator, quote unquote, to a woman's space attracts a lot more social, like unacceptability and then violence in that sense. So it's very scary to also travel in the women's coach sometimes. And then I also tend to also try to perform a lot, like, you know, before going to the women's coach, I'll make sure I put on a bindi to at least be like, you know, they don't straight out think I'm a man, at least have two questions in their head: who is this, what is this? That happens. And which brings me to my last point about doing the daily traveling, is that there's gaze, and people are looking at you constantly, and it becomes too much. And it's not simply only in traveling, it's just me existing in any space it becomes like almost as if, you know, everybody else around me is anxious, and somehow I'm supposed to do something to settle that down. And I constantly feel that burden on myself. And this is also something which comes with visibility as a trans person and my body as a trans person, that this gaze is accorded to me because of that. And that is why next, when I enter my university space, is that also happens there, where, you know, there is too much looking at me, where people can't stop but turn their heads. On days I enjoy, I love it, and I'm like, yes, go and get confused, don't sleep tonight, it's good. But it's not every day that it can be like that. So it's also violence, and it also hurts in our daily. So that was about the travel. Now, when I'm in the university space, one thing that I noticed myself in the very primary, and which became very formative for me, not only in my university space, but also in any public space at all, which is the washroom. There is no gender neutral washroom in my campus, and it is also a large precedent that there are no gender neutral washrooms in public spaces anywhere. So this is not only about any space like university, but any public space like hospitals for that matter, and other spaces also. The kind of violence that trans people have to face is very, it's too much. Like, you know, not only like washroom becomes an issue, other things also become an issue. Like Anandh also talked about right now, how the entire work that was primarily done in Kerala was around two things. Was one, making space for trans people in jails, and secondly is to spend money on trans people's surgeries. So all of these interventions again become very invasive and come from a space where there's some kind of an expertise that's assumed on the behalf of the state, and that's when this intervention is made. And I mean, if I start talking about the hospital and how the public health system treats trans people, it will really become a bit longer. Yeah,
Exactly. I agree with Meera, what that typing in the text. So yeah, so public health system also becomes like that. Often, not only often, I feel all the time, there's some kind agency is completely stripped out of our bodies, and it's happened so many times with me that I've been prescribed HIV test out of the blue, and I've not even gone to some public government services to say that I need an HIV test, but it's prescribed, and it happens not only with trans people but also sex workers, and people who are seen as some kind of a stigmatization for this kind of yeah, disease understanding like that is there. So yeah, I mean, the entire public health system treats trans people like very terribly, like extremely terribly. In fact, a lot of trans people have told me that they don't want to go and sit in these waiting areas that are made for everyone in a government hospital, because then it's not only them sitting there and waiting to get services, but it's also other people's gaze which is on them. And how you said also, it becomes watch rooms for us all the time. So there's also exclusive space that's why they're important, and that's why they're required. So yeah, coming back to the issue of washroom in my campus and taking you through what a day looks like. So now I'm in the campus and now I need a washroom. So what do I do? A simple thing will be to say that I need a washroom to the administration, or to raise this demand. Except that's not how it's going to be working, because our current situation and the context that we live in is not as simple anymore. And I don't know if it has ever been as well. But right now, the kind of administration is not only in my university, but is also present in other universities, is extremely non-cooperative and repressive in any way, shape, and form of anything that looks, smells, and appears like dissent. So I can't even talk about whatever I'm even speaking. I can't talk about and say that this is what we need. I think whatever information that I've received from other people who have all been in the university and have had this struggle for longer duration, is that they also say things like, ye America mein hota hai aur yahan nahi hota hai. To say that, as a washroom is an issue which is something that only people in America need. So yeah, that's the kind of situation that we are at with the administration. So that's one way that we, how I face barrier. The second way also is that I also work with a policy network. So it's a network which tries to work for policy advocacy. So we try to hold people accountable and try to implement policies which are already there in place. One thing that I found out through this is that there's already a UGC guideline on public gender neutral washroom in higher educational institutions, and which I am like telling all of you also that, if you're in a university space and you feel like this is an issue for you, you can leverage this notice which is by the UGC to mandate of sorts that you need to have at least one gender neutral washroom in a higher educational institute. Except the way that this functions again is so complicated is because the entire language of the notice is very vague and flimsy, and it doesn't make sense to anybody. I think that's generally how policies are also. Like, they just talk, and I don't even know why they're talking like that. So the language they've used is, they said that it's for unisex washroom. And that gives me no understanding of unisex washroom is okay. But for whom, like there's no conversation around that. Another thing that I've also seen South Delhi Municipal Corporation do in Lodhi Garden and other newer constructions they're having in public spaces is that they're clubbing the gender neutral washroom. They're making gender neutral washroom. It's called trans person's washroom. Even Delhi Metro is trying to do that. But they're clubbing these trans people's and gender neutral washroom with disability friendly washroom. So the spaces they're trying to sort of merge. I mean, that's not like, it's just not simply fair. Accessibility washroom should be there regardless of, and gender neutral washroom should be there regardless. If you have an accessibility washroom, does not mean you don't need to make gender neutral washroom. And if you have a gender neutral washroom, does not mean you don't need to make it accessibility friendly. So you have to do both in all spaces. So that understanding is also not there. Yeah, and lastly, and also very interestingly, is that I've not been able to even open that notice to understand what's there. All information I have from press releases, because the website of UGC doesn't work. Like, I click on that and it just says the document can't open.
So that's the state of affairs we are dealing with right now. Now coming to like sort of tracing like, what can be done in this situation, then comes the idea of queer spaces and collectives that are springing up not only now but have been for a very long time, at least a decade now, in the university spaces, especially in Delhi. If I can map and say, then even my experiences of being in university for the past 3-4 years is that there are a lot of queer collectives coming up, and it's a very nice thing that we're seeing a lot of queer collectives opening in all of the university spaces where queer students are coming together to say that they're asserting their identities as queer persons, and they're claiming space, they're creating safe space for each other to explore and to understand queerness for each other. But my next question here is that who gets to come to these universities at the first place, and then who gets to be a part of these queer collectives, and then what are the understandings of these queer collectives, like how are they being informed, and what is their understanding of pride? And this is where I'll also talk about the idea of pride in itself, like it's like I also have said this before and I'll say it again, is it's a cycle, and it's a cycle in the sense that exclusion is a cycle, right? So excluding trans people from any space, like you don't have any policy on us. There's a trans bill which is so regressive and draconian, and all of these things are happening at the same time. When reservations are being talked about, they're saying that trans people will be given reservation in the OBC category, which is completely unfair. And Grace Akka also talked about it, and how we need and demand for horizontal reservation for trans persons. So this is where it starts, right? People who don't have any idea about who trans people are, what their lived experiences are, and what our lives look like, will make laws about us, and then put us in like newer kinds of restrictions that we have to continuously then keep dealing with. Then what our queer lives at the end become about is to deal with like legality, and do this fight, do that fight, and just keep making spaces and keep undoing what they continuously keep doing. So we need to also understand pride today. So how pride is visible today is that on social media and a lot of other places, you'll see a lot of rainbows out there, and you will see a lot of like happy faces, people dancing and marching, and that's the largest idea of pride that's being propagated by who? It's by the market. It's by people who want you to buy your products by saying that we are queer friendly and hence we are better than the other, and that's why please take this from us. And it's the market that's trying to co-opt the entire idea of pride, which has never been about this. Because yesterday only I saw in someone's story that they had been to some restaurant or something, and there's a thing called Pride LIIT, which is a Long Island iced tea, which is a kind of drink. And it was for 800 rupees, and a classic LIIT is for 600 rupees. So 200 rupees for being gay. I mean, what are you adding in it really to make it like that? It's very funny, but it's also very sad. It's because then the people who will understand and celebrate the idea of pride are coming from these kind of spaces like Grace. I'll interrupt you a bit. Wrap it up. Yeah, can you just wrap up? Yeah, I'm so sorry. So so like Grace Akka also mentioned about who are getting to celebrate pride today, and what are the understandings of pride today. So this is the dominant understanding, is celebration, which is coming from the people who are elite, who are caste, coming from caste backgrounds, which are upper, and then class backgrounds again, which are upper, religion, disability backgrounds, all of these things are there, right? And that is where we need to make intervention and say that this is not how it happens. Like even our queer spaces in the student spaces and campuses are increasingly becoming like that. And we don't want it that way. We want more intervention from people from the margins, and to say that this is not what pride is. Pride is much more than this. Pride is much more about, like Grace Akka also said, this is not social justice, and we do not accept it as social justice. So yeah, what I feel like moving ahead will have to happen is that politics will need to happen, and people will need to talk about and call out this, and just say that this is not pride, and this is not my celebration, if this is not about the kind of things that are done. If you're not talking about the persecution of Muslims in this country, which is happening right now, if you're not talking about caste atrocities, if you're not doing anything about making your spaces more inclusive, then this is not pride for me.
थैंक्स सो मच कृषाणु। कृषाणु ने जो बात रखा है यहाँ पे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो खुद का जो जर्नी है पब्लिक स्पेस में उसके ऊपर बात किया। और पब्लिक स्पेस एक्चुअली एक ऐसी पब्लिक स्पेस, मतलब स्ट्रीट से लेके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कुछ एनी इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सब उसमें आता है। और शायद मतलब हम लोग जो क्वेयर ट्रांस कम्युनिटी के पार्ट है और जो पार्ट नहीं भी है, उनको भी मालूम है कि किस तरीके से ट्रांस लोगों के ऊपर, जेंडर नॉन बाइनरी लोगों के ऊपर किस तरीके से एक्चुअली सोसाइटी पेश आती है। और क्योंकि कृषाणु ने जो भी एग्जाम्पल लाया है हमारे सामने, वो बहुत क्लियर है कि हमारे पब्लिक स्पेस में भी अभी भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ वो मैन और वुमन के अंडरस्टैंडिंग, पुरुष और महिला के सोच में ही सीमित है। और वहां पे जो थर्ड जेंडर, जिसको ट्रांसजेंडर, ऐसे ऐसे जो लोग हैं, उनको एक अलग तरीके का वो आदराइजेशन बहुत स्पष्ट होता है पब्लिक स्पेस में। और सिर्फ आदराइजेशन नहीं, उसके साथ साथ जो एक भेदभाव होता है उनके साथ, वो ट्रेन के कमरे में हो, वो पब्लिक टॉयलेट में हो, वो यूनिवर्सिटी स्पेस के अंदर हो, उसका जो एक्सपीरियंस, जो रोजाना एक्सपीरियंस डील करना पड़ता है ट्रांस और क्वेयर लोगों को, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हर दिन में वो डिस्क्रिमिनेशन होता जाता है। और वो एक वायलेंस के तौर पे भी, जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वायलेंस के तौर पे भी वो ट्रांसलेटेड होता है कभी कभी। तो वहां पे कृषाणु ने एक्चुअली बहुत डिटेल से बात किया कि बस में, ट्रेन में, और उसके बाद यूनिवर्सिटी स्पेस में भी कैसे जो गेज है, जो मेल गेज है, जो एक्चुअली सिर्फ मेल गेज पे सीमित नहीं रहता है, जो विमेन्स गेज में भी ट्रांसलेट होता है। क्योंकि जब हम जो भी जेंडर नॉन बाइनरी लोग हैं, जो भी ट्रांस पर्सन है, जब हम क्लेम करना चाहते हैं किसी स्पेस को, अगर एज अ ट्रांस फेमिनिन पर्सन अगर हम क्लेम करना चाहते हैं कुछ विमेन्स कंपार्टमेंट को, तो वहां पे विमेन, जो सिस विमेन है, वो बहुत एक अलग गेज से हमारे ऊपर देखते हैं। और वो एक पूरा, मतलब तुम कौन हो, तुम क्यों हो यहाँ पे, ये हमारा स्पेस है, वो बिलोंगिंग का बात तो है ही नहीं, लेकिन वो एक सर्वेलेंस के तौर पे चले जाता है और वहां से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। तो ये जो हर दिन का जो एक्सपीरियंस है, जो एक डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस है, उसके ऊपर कृषाणु ने ज्यादा बात किया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कैसे यूनिवर्सिटी स्पेसेस में यूजीसी गाइडलाइन अभी अभी शुरू हुआ है कि कैसे हमको जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम, एक एटलीस्ट वन जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम चाहिए होता है यूनिवर्सिटी स्पेस में। लेकिन वहां पे भी हमको मालूम है कि यूनिवर्सिटीज एक्चुअली डू नॉट आर नॉट एक्चुअली in any way they are not obligated to construct that। और वो भी एक ऐसा ही नियम है कि तुम बनाओ ना बनाओ, तुम्हारे ऊपर तो कोई उतना प्रेशर भी नहीं रहता है। तो जो भी कानूनी या पॉलिसी लेवल भी जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, ऐसा नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशनल कुछ चेंजेस में ट्रांसलेट हो रहा है अभी। तो यहाँ पे शायद हम थोड़ा यहाँ का कृषाणु के बात को लेकर हम हमारे नेक्स्ट स्पीकर के पास जाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्पीकर है ताशी। ताशी is a practicing Buddhist monastic with more than a decade of experience in human rights and community work. They are currently working as a project fellow at Anveshi's Research Center for Women's Studies, Hyderabad, and are also an executive committee member at Anveshi. They are a core group member of the National Ecumenical Forum for Gender and Sexual Minorities at the National Council of Churches in India and a fellow at Salzburg Global LGBT Forum. They are one of the founding members of Telangana Hijra Intersex Transgender Samiti and Queer Swabhiman Yatra.
They're also a student of Buddhist philosophy and psychology. Their primary areas of interest are community building, faith, religion, mental health, and queer rights and their intersections. Tashi, I'll ask you to take over and continue the discussion. Yeah. Thank you, Poushali. मैं सुबह पौशाली को बोल चुकी हूँ कि मेरा जो है अंत में रखना, क्योंकि इससे बड़ी वैलिड एक्सक्यूज क्या हो सकता है कि मेरे पहले इतने बेहतरीन लोग उनके काम के बारे में और मुद्दों के बारे में इतने अच्छी तरीके से बताए और मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े। और जो भी ग्रेस और आनंद और कृष्णानु ने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। कृष्णानु, आप अपने जो स्वयं अनुभव को हम सबसे शेयर किया यहाँ पे ये पब्लिक स्पेस में, मुझे याद है कि बहुत साल पहले जब मैं साड़ी में थी और फेशियल हेयर भी था, दाढ़ी भी था, उस वक्त दिल्ली में जब किसी काम के वास्ते आते थे, वो मेट्रो के स्टेशन में जाना बहुत मुश्किल होता था। एक बार तो एक सिक्योरिटी गार्ड मतलब चेक करने के लिए मना किया, मुझे नहीं करना है आपको चेक, मतलब उनके साथ आर्ग्यूमेंट करके चेकिंग करवा के अंदर जाना पड़ा। तो आपने जो बताया उससे लगता है कि बहुत कुछ बदला, लेकिन बहुत कुछ बदला भी नहीं है अभी तक। थैंक यू उसके लिए। और सबको सतरंगी सलाम, जय भीम। ये बहुत कुछ मूवमेंट में, ट्रांस मूवमेंट, क्वेयर राइट्स मूवमेंट में बहुत कुछ बदलाव आई, और एक्ट्स हो, जजमेंट्स हो, जो भी हो, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन ये सब जो हो रहा है, मैं खासकर अपने सिस हेड फ्रेंड से बहुत सुनने में आता है कि ये तो बहुत कुछ हो रहा है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ आप लोग बहुत विजिबल बन गए। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है उनको कैसे समझाऊं, ये जो विजिबिलिटी है, जिस तरह का विजिबिलिटी है, जिस माहौल में विजिबिलिटी है, उस विजिबिलिटी को लेके डर लगता है, उस विजिबिलिटी को लेके, उस विजिबिलिटी के देखो अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा विजिबिलिटी है, मतलब ऐसे पूरा सामने लेके खड़ा कर दिया, लेकिन मतलब किले के ऊपर कोने में खड़ा कर दिया, लेकिन कुछ सपोर्ट नहीं है, कुछ पकड़ने के, कुछ रहने के, स्टेबल मतलब संभाल के रहने के लिए कुछ सपोर्ट नहीं है, कुछ सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी है, बहुत सारा विजिबिलिटी है। उस विजिबिलिटी को लेके हम क्वेयर ट्रांस को क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। मतलब उस विजिबिलिटी को लेके बहुत सारे लोग खुश है हमारे सिवा, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना होगा शायद। बाहर मतलब जो भी लोग इस विजिबिलिटी को लेके खुश है, और ये जो प्राइड है, मतलब ये गर्व है किसका और किस लिए है? मुझे तो लगता है अभी जो 2-3 साल से ये व्हाट्सएप में, और ये जून प्राइड मंथ शुरू में, हैप्पी प्राइड मंथ, हैप्पी प्राइड, आई मीन लाइक ठीक है, मतलब हिस्ट्री है, मोमेंट है, सेलिब्रेट करना है कोई, लेकिन ये जो इतना पॉपुलर बन गए प्राइड मंथ, मुझे ये लगता है कि ये पॉपुलैरिटी, कम्युनिटी और मूवमेंट स्ट्रेंथन होने का मतलब और आगे बढ़ने का ये नहीं है, लेकिन ये जो कैपिटलिज्म का पकड़ है, ताकत है कम्युनिटीज के ऊपर, मूवमेंट्स के ऊपर, वो बढ़ने का एक सिम्टम लगता है मुझे। तो उसको लेके थोड़ा परेशानी होता है खुशी से ज्यादा। और ये विजिबिलिटी, जैसे मैंने बोला, बहुत ट्रिकी मामला है, और ये विजिबिलिटी मतलब अभी जो भी बहुत सारे यंग लोग हैं, उनको अपने इंटरनेट में इंफॉर्मेशन मिलता है, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिलता है, मतलब जेंडर के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, फैमिली लोगों को भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। तो घर में बच्चों के ऊपर ज्यादा सर्वेलेंस बढ़ जाता है अभी, और ये जब बच्चे मतलब आउट किए जाते हैं, या अपने आप अपने आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं, क्योंकि इतना विजिबिलिटी है, उनको भी लगता है शायद दुनिया बदल गई, लेकिन वो बताने के बाद पता चलता है दुनिया इतना भी ज्यादा नहीं बदली, जैसे है वैसे ही और ज्यादा खराब हो रहा है शायद। और ये क्वियर कम्युनिटी के स्पेसेस जो है, अभी जैसे हम लोग सब यहाँ पे है, बात कर रहे इतने विषयों के बारे में, सेफ स्पेस है, जैसे ग्रेस ने कहा है, हमारा सेफ स्पेस है, लेकिन ये भी सोचना जरूरी है शायद क्वियर स्पेस खुद कितना सेफ स्पेस है। खासकर जैसे ग्रेस ने कहा कि अप्रेस्ड कास्ट लोगों के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, आदिवासी लोगों के लिए क्वेयर स्पेसेस कितना सेफ स्पेसेस है। जितने भी क्वेयर स्पेसेस है, जो भी सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन्स में, सेकेंड टायर टाउन्स में, ये क्वेयर स्पेसेस कितना सेफ स्पेसेस है बाकी लोगों के लिए।
मुझे लगता है क्वेयर स्पेस अभी भी एंटी कास्ट स्पेस नहीं है, फेमिनिस्ट स्पेस नहीं है, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए स्पेस नहीं है। तो क्वेयर कम्युनिटीज के अंदर भी अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। उनको ऐसा एक स्पेस बनाने के लिए ऐसा जगह बनाए जहाँ पे सारे मुद्दों के बारे में डिस्कशन हो, चर्चा हो, और एक ऐसा जगह बनाए जहाँ पे मतलब एक दूसरों को ना समझने की एक्नॉलेजमेंट हो। मतलब जैसे कि क्वेयर स्पेस में एलजीबीटी जो इतना एलजीबीटी कम्युनिटीज है उनके बीच में भी एक दूसरे का समझ नहीं है। क्वेयर स्पेसेस अभी भी ज्यादा से अपर कास्ट, अपर क्लास, एलीट, अंग्रेजी में बात करने वाले, सिस जेंडर, गे, स्पेशली मेन के जगह है, ऐसे ही बन के आगे जा रहे। तो ये बदलना जरूरी है। और ये मतलब खासकर जब तेलंगाना में देखूंगा मैं, यहाँ पे बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे दूसरे मूवमेंट के कलेक्टिव्स, उनमें क्वेयर लोगों के लिए जगह है थोड़ा बहुत, लेकिन क्वेयर स्पेसेस में उन दूसरे मुद्दों के लिए जगह नहीं है अभी भी लगता है मुझे। तो वो कैसे बदला जाए उसको लेके चिंता करना बहुत जरूरी है, खासकर प्रिविलेज्ड क्वेयर लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है ये। और ये जो प्राइड मंथ है सेलिब्रेशन सही है, लेकिन मुझे लगता है ये प्रिविलेज्ड क्वेयर लोगों के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए रिफ्लेक्शन की समय होना चाहिए कि हम लोग रिफ्लेक्ट करें कि हम किस प्राइड की बात कर रहे हैं, कि हम कहाँ पे हैं, क्या काम कर रहे हैं, मतलब ये संघर्ष आगे कैसे जा रहे हैं और किसके लिए संघर्ष चल रहा है। मतलब ये जब भी जो सेम सेक्स मैरिज का भी चल रहा है, अब जाके दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ वहाँ इतने सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, तो उसको देख के खुद मतलब हम में से कोई भी बता सकते हैं कि क्वेयर कम्युनिटीज में भी कितना एक्सक्लूजनरी स्पेसेस बिल्ड हो रहा है। मतलब ये सेम सेक्स मैरिज है, मतलब ठीक है मैरिज पे अपना क्रिटिक अलग रखो, लेकिन कम से कम मैरिज के लिए बारे में पूछते हो, अगर कोर्ट के पास जा रहे हो तो सबके मैरिज के बारे में पूछो, ऑल जेंडर इंक्लूसिव, ऑल सेक्स इंक्लूसिव मैरिज के लिए पूछो। लेकिन उतना सोच भी नहीं है हमारे मूवमेंट्स में अभी, तो वो भी सोचना जरूरी है शायद। खासकर जब तेलंगाना की बात हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलेक्टिव्स और ग्रुप्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ भी मिलके काम कर रहे हैं। खासकर पिछले 1-2 साल में सरकार के साथ लेके कुछ काम हुए हैं, वो भी सरकार में कुछ डिपार्टमेंट्स को लेके उनके साथ काम हुआ है। लेकिन हमारे सरकार तो यहाँ अभी भी गहरे नींद में है। मतलब ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का एक्ट आया हुआ है और उसका यहाँ बोर्ड बनाना है या पॉलिसी बनाना है, ऐसा कोई ये नहीं है। और जब भी सरकार के पास जाओ कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन लेके मतलब आप लोग कुछ करो, पहला सवाल आता है कि आप लोग है कितने, मतलब आप लोग है कितने। मतलब ये जो सरकार इतना बड़ा मिशनरी लेके बैठी है वहां पे, उनको मालूम नहीं हम लोग कितने हैं, और उनको पता लगाने के मन भी नहीं है। लेकिन जो हम लोग हर दिन का जिंदगी गुजारने में मतलब इतना स्ट्रगल करते हैं, हम लोगों को पूछते कि आप लोग कितने हैं। मतलब अब पता नहीं, आप सब बाहर जाके सर्वे करने लगेंगे, हम लोग कितने हैं ये पता करने लगेंगे, मतलब ये जिम्मेदारी भी हमारा है। तो ऐसा सरकार का वही हालात है। मतलब उनको कुछ कहने जाओ लोग, हम लोग, वो लोग खुद हमको काम देते हैं। रिसेंटली आज कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक लेस्बियन वुमेन क्राइसिस में थी, और उनको रहने का जगह नहीं, वो बेघर हो गए और रहने के लिए जगह चाहिए थी उनको। और मैं हैदराबाद में नहीं था उस वक्त, और हम लोगों ने कोशिश की कि किसी और के घर में रखने का, वो भी हो नहीं पाया। तो हम लोगों ने कहा कि एक गवर्नमेंट रन के शेल्टर होम में जाने के लिए, और कुछ लोग जान पहचान लोगों से बात किए हैं और वहां पे भेजे हैं। और ये जो है 21 साल की यंग हिंदी स्पीकिंग लेस्बियन वुमेन थी, और वहां जाके उन्होंने साफ साफ बोला उनका हालात, वो लेस्बियन थे, वो उनको दूसरे वुमन के और सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, और उनके इसके लिए उनका मतलब डिस्क्रिमिनेशन कैसा हुआ और बेघर कैसे होना पड़ा, वो सब बताया। और जैसे ये उन्होंने बताया वहां पे, सीधा मुझे फोन आता है कि ये लोग तो ये बोल रहे हैं कि इनका दूसरे लोगों को लेके आकर्षण हो, दूसरे वुमन को लेके, मेरे शेल्टर होम में तो माइनर गर्ल्स है, इसको कैसे रखे हम यहाँ पे, अब मुझे नहीं रखना है, रिस्क नहीं लेना है हमको। मतलब
इतना भी दूर जब भी मतलब 2022 में आए हैं, लेकिन एक लेस्बियन वुमन को देखे तो अभी वो सेक्सुअल बीइंग ही लगता है, और कोई मतलब नहीं है, और कोई आइडेंटिटी नहीं है, और कोई स्ट्रगल नहीं है। मतलब वो सेक्सुअल बीइंग ही नहीं, सेक्सुअल प्रेडेटर भी है वो। मतलब ऐसा सोच मतलब देख के डर लगता है। मतलब जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए अगर क्राइसिस में है। मतलब उसको देख के लगता है कि क्वेयर पीपल, ट्रांस पीपल क्राइसिस में नहीं है, वो खुद वो अस्तित्व, आइडेंटिटी, लाइफ खुद ही क्राइसिस है। मतलब ऐसा कैसे बन गया? और ये सरकार कर क्या रही है? लोगों का जिंदगी खुद क्राइसिस बनते हुए कर क्या रही है? सो ये अभी भी एक प्रोग्रेसिव बात है हमारे यहाँ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, यहाँ पे ट्रांस वुमेन को वुमेन मान के उनका स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे। इसमें मीरा भी साथ में है, यहाँ पे जो माला आंटी है वो साथ में है, बाकी सब लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली रिसेंटली एक प्रोग्राम में मैंने सुना एक पुलिस ऑफिसर को हायर पुलिस ऑफिसर को बोलते हुए कि जेंडर अफर्मिंग केयर के बारे में बात करते हुए सुना मैंने। और वो जेंडर अफर्मिंग केयर को लेके बोलते हुए उन्होंने ये बोली कि जेंडर अफर्मिंग केयर जो है उनमें पुलिस का भी रोल है। वो सुन के मुझे थोड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, लेकिन वो ट्रांसलेट काम में कैसे ट्रांसलेट होता है वो अलग बात है। और शायद हम सब क्वेयर लोगों को भी, क्वेयर मूवमेंट्स को भी, ये हम जो जेंडर अफर्मिंग सर्जरी बोलते हैं, ये जेंडर अफर्मिंग केयर बोलते हैं, ये सिर्फ मेडिकल केयर नहीं है। ये जेंडर अफर्मिंग केयर जो है ये सोशल तौर पे, सामाजिक तौर पे होना जरूरी है। खासकर पुलिस, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक स्पेसेस, ये सारे मुद्दों को लेके ये जेंडर अफर्मिंग केयर होना है। तभी हमारा जो भी जेंडर आइडेंटिटी हो या मुद्दे हो या इश्यूज हो, उनको एड्रेस करे या हमारे आइडेंटिटीज को अफर्म करे। हम लोग अपने आप को सुरक्षित माने इस समाज में, घर से बाहर निकलते हो या घर में रहते हुए भी हो, सुरक्षित माने, ये तभी संभव हो सकता है। और ये जिम्मेदारी क्वेयर कम्युनिटी को बनाने का जिम्मेदारी, क्वेयर कम्युनिटी को भी सेफ कम्युनिटी बनाने की जिम्मेदारी प्रिविलेज्ड क्वेयर लोगों के ऊपर है, मेरे जैसे लोगों के ऊपर है। वो जिम्मेदारी मानना और जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है, वरना हम लोग जितने भी बाहर सरकार से और कई और लोगों से जितने भी बात करें और जितने भी पॉलिसीज, लॉस के बारे में फाइट करें, अगर हम अपने खुद के कम्युनिटी स्पेसेस को इंक्लूसिव, अफर्मिंग, सुरक्षित नहीं बना पाएंगे, तो हम सबको साथ में लेके जाना और सबके भलाई के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू सो मच ताशी। आपने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट किए हैं। विजिबिलिटी के बारे में तो हम चर्चाएं शुरू से कर रहे हैं, और हाँ मतलब सचमुच किसका विजिबिलिटी, कैसे विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी को लेकर हम क्या करें, वो एक हमारे लिए एक एक्चुअली सर्कस बन गया है शायद। तो मुझे लगता है हम जो भी यहाँ पे इतने सारे बातें हुए हैं, एक तो है कि क्वेयर ट्रांस जो कम्युनिटी है उनका खुद का जो आंदोलन है, और वो आंदोलन किस दिशा में है आज, और वहाँ पे जो भी हम एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन के बात करते हैं, मतलब प्राइड का मतलब, जो अगर हम हमारे तौर पे सोचे तो प्राइड एक्चुअली जो सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी के बात को लेकर शुरू हुआ था, अगर उसको हमको आगे ले जाना है तो वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन के लिए हम लड़ रहे हैं, और हम कुछ होमोजेनस ग्रुप नहीं है, बहुत हेट्रोजेनस है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्रेस्ड कास्ट, क्लास, माइनॉरिटीज के लोग हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये एक्चुअली बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे कलेक्टिव्स अलग अलग टाइम में जो शुरू हुआ है, उन्होंने एक्चुअली ये लड़ाई शुरू किया है, और अभी भी वो लड़ाई चालू है। तो जो हम एक्चुअली एक प्राइड इवेंट के सामने जो हमारे सामने आते हैं हर एक शहर में, जो एक कोलकाता प्राइड या बॉम्बे प्राइड या दिल्ली प्राइड जो हमारे सामने आते हैं, वो एक्चुअली शायद हमको वो क्लियर पिक्चर नहीं दिखाता है
जहाँ पे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो जो अलग अलग लेवल पे जो हर दिन का जो लड़ाई है, जो स्टेट के साथ लड़ाई है, जो कानूनी तौर पे जो लड़ाई है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट का जो लड़ाई है, जिसके ऊपर ताशी ने बात किया कि कैसे मतलब हर एक स्पीकर ने एक्चुअली बात किया। और मैं यही सोच रही थी ताशी कि जो ये लेस्बियन लड़की के बारे में तुम बात कर रही थी कि शेल्टर होम में वहां पे ये एक मुश्किल हो गया कि so the lesbian girl now becomes the predator and her sexuality is her only identity, right? तो ये शायद मतलब एक्चुअली ये 20 साल 25 साल पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। तो चेंज एक्चुअली शायद पता नहीं कहाँ कहाँ पे शायद चेंज हुआ है, हमको भी नहीं पता। शायद बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे वो ही एक मतलब विजिबिलिटी बना है। और विजिबिलिटी भी बना है क्योंकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बहुत काम किए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ स्टेट ने कुछ अलग से कुछ रिकग्निशन डाल दिया, एक्चुअली वो सिर्फ कैटेगराइज कर रहे हैं हम लोगों को, और कैटेगराइज करके उनका जो ज्यादा बेनिफिट होगा वैसे ही वो कैटेगराइज कर रहे हैं। तो वो सर्जरी के मामले में भी हम देख रहे हैं, जो आनंद ने भी बात किया कि जेल में द फर्स्ट importance is that you make separate cell for transgender people in the jail. So I mean really we don't know how to actually understand that. तो ये सब जो चीजें जो आसपास जो हमारे महल में जो बदल आ रहा है उसमें बहुत प्रकट है कि जिस तरीके का डेवलपमेंट, जिस तरीके का एक्सेप्टेंस और रिकग्निशन की बात हो रहा है वो बहुत एक डिफाइंड मतलब एक स्टेट डिफाइंड एक्सेप्टेंस और रिकग्निशन है शायद। और क्योंकि जो भी मतलब पॉलिसी लेवल और कानूनी तौर पे भी जो भी रिकग्निशन, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वहां पे भी हमको दिखता है कि एक्चुअली इट्स अ गिव एंड टेक मैकेनिज्म। और उसमें ज्यादातर हम थोड़ा थोड़ा ऐसे क्योंकि हमको वोट जीतना है, क्योंकि हमको इस कम्युनिटी को पकड़ के रखना है, हमको नहीं मालूम है कि कितने सारे लोग हैं। और हम कभी कभी भाषण में ये भी बता देते हैं कि बहुत ही छोटे पॉपुलेशन है, क्वेयर ट्रांस लोग तो उतना है ही नहीं, वो मतलब कितने सारे लोग होगा, लगभग कुछ 400 कुछ 500 शायद। तो ऐसे भाषण ऐसे केयरलेस और ह्यूमिलिएटिंग भाषण तो बहुत सारे होते हैं, होता ही रहता है। लेकिन यही हमारा जो कोशिश चालू रहा है और अभी भी है शायद, मतलब वो जेंडर अफर्मेटिव केयर के बारे में हो, वो एक इक्वल सिटीजनशिप राइट एस्टैब्लिश करने के लिए जो एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू एकोमोडेशन, इसके बारे में हो। तो यहाँ पे जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं अभी भी और बहुत ज्यादा ही फेस कर रहे हैं शायद, तो उसको और भी ज्यादा पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा, उसके ऊपर बातचीत करना पड़ेगा। और शायद ये डिस्कशन एक मौका रहा जहाँ पे हम थोड़ा बहुत शेयर कर सके इसके ऊपर। तो या प्लीज बस आई मीन तुमने जो बोला वो सुनते हुए ये दिमाग में आया कि ये जो सरकार है, ये जो स्टेट है या जो कॉर्पोरेट्स है, जो भी LGBT कम्युनिटी के साथ काम करना चाहते हैं, हमारा जो भी हमारे साथ कुछ भी करना चाहते हैं, इनका ये ऐसा सोच है अभी भी ये जो हमको फिक्स करना चाहते हैं, मतलब ट्रांस कम्युनिटीज को, क्वेयर कम्युनिटीज को फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन जो बाकी समाज है, जो बड़ा समाज है, जो ट्रांसफोबिक है, क्वेयरफोबिक है, उसको फिक्स नहीं करना है, बस हम लोगों को फिक्स करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है। ये एक लेंस लेके जाना है। इसीलिए तो पहले सेल्स ओपन करेंगे जेल्स में और पुलिस हेल्प डेस्क शुरू करेंगे पुलिस स्टेशन में। पहला हेल्प डेस्क तो तेलंगाना में पुलिस स्टेशन, पुलिस कमिश्नरेट में शुरू हुआ। मतलब ट्रांस लोगों को क्रिमिनल लॉ के नजर से ही देखो, मतलब और कुछ मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग समस्या है, हमको फिक्स करो आप लोग, यही मुद्दा है उनका। एक क्रिमिनल लॉ चला गया, दूसरा तरीके से क्रिमिनलाइज करो अब। बिल्कुल। हाँ ओके, सो हम एक डिस्कशन अभी फ्लोर ओपन कर
हैं, जो भी यहाँ पे बहुत सारे साथियाँ हैं हमारे अभी भी चैट में, या अगर आप खुद को अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज। चैट में कोई क्वेश्चन या क्वेश्चन आया है क्या मीरा? As much as I can see, there are I no didn't note questions. questions. There were some comments. हाँ, हाँ. But if anyone wants to say anything, we can briefly have this open session and then move to concluding comments. कोई साथी अगर कुछ टिप्पणी या सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि 3 वक्ता अभी भी है, we have 3 of our speakers with us, so if anyone wants to or add anything or mention anything. Anandh is also there, but yeah, he will not be on video. Or we can move to the Mala aunty, do you want to say anything? She's always been in support of. Acha, Deepti has a question. Oh. No, that's not a question. Sorry, that's the individual comment. I have no comments, but one thing I can say, so whatever we are doing, see, I'm thinking, Tamil Nadu is doing great job. So, Mala aunty, can you please introduce yourself? Can you please introduce? Yeah, I am a social worker and from 2003. And from 2012, I'm working for this community. My child is a trans child. And I'm working with Rachana and Tashi and Brother Varghese, and started working with government organizations. But still, there is a lot to work on this. We started getting vaccinations done for them. And we got entries in DLSS to solve any problems in legally. They included this LGBT community in their free services. Whenever we are getting few cases, we are guiding, we are sending them to them. And now we are concentrating on health, because there are many children coming out and asking for their GAD certificates, transitions, everything. So now we are waiting for our health minister's appointment, everything, etc. Hope things will move fast. But this is not sufficient. We'll have to work vigorously. Many people will have to come forward and try to do something for this community. There's a lot to do still. Thank you so much, Mala aunty. Thank you. Yeah. Meera, do you want to comment or say anything? Someone else has also raised their hand. Okay. Ritash. Ritash, yeah. Please go ahead. Hi, this is Meera. I don't know whether you remember my new name, but anyway, this is Pushpa is my official name. So yeah. Oh, so sorry, the video. I just saw the thing. Sorry. Yeah, no problem. So good to see so many familiar faces and friends here, and lots of love to you all. Yeah, I think the vital points are like Anandh. Okay, I know Anandh by a different name, but anyway, I'll try not to use that. And Tashi, of course. So it's so important for us to also understand what we call the lesser known identity is for us, for many of us. By the way, I am asexual and gender fluid, Bangalore based. तो मैं हिंदी में भी बोल सकती हूँ जो भी है. हाँ, तो हमें आई थिंक ये मुद्दे पे शायद बात करना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़े कि हम एक दूसरे को समझ पाए और अच्छी तरीके से. क्योंकि जैसे एसेक्सुअलिटी के बारे में मुझे तो बचपन मतलब टीनेज में पता था
लेकिन मुझे तब तो डिस्पाइट ऑल माय प्रिविलेजेस मुझे वो नाम नहीं मालूम था, वो शब्द नहीं मालूम था, and more so with my fluidity also. So I think while we are expecting the whatever we call that cis-het world या जो भी straight world to understand and accept us, हमारे बीच में जो ग्रेस ने भी बोला था पहले, with all our other overlapping identities and challenges, उस पे भी हमें क्योंकि because sometimes whether we like it or not, there are certain things which are also separating us and which perhaps were not there earlier. I sometimes wonder कि ना जैसे new terminologies, identities या जो भी आगे आ रहे हैं, कभी कभार हमें लगता है, मुझे लगता है जैसे लोग पहले ओ like you know मेरे आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बात हुआ, मैं you know मेरे विषय के बारे, then I'll be like मैं हूँ कौन, मतलब सबके बिना हम है ही नहीं ना, जो LGBTQI+ एक दिन तो इंग्लिश अल्फाबेट के शब्द मतलब काफी नहीं होंगे इसके लिए, तो आई थिंक कभी कभार हमें अपने बीच का भी मुद्दों पे काम करना ही पड़ेगा, और मतलब ना कि ये और जो भी आई मीन आई डोंट वांट टू मेंशन, बट हमें जरूर मालूम है कि लॉट्स ऑफ डीप डिविजन्स हैव ऑलरेडी सेट इन, especially on you know emerging from the Hindutvavadis within our groups, and because of which the casteism, and you know, so I think I'm not saying कि हम लोग नहीं कर रहे हैं या कोशिश करते रहते हैं और करना ही पड़ेगा, लेकिन hopefully in the next few sessions if we can have more of an interaction on that, अच्छा होगा. But fantastic, and you know, so happy to be to hear and you know sort of being able to share. Thank you so much everybody, and happy Pride Month despite all the you know things that we know, the exclusions which are there. Thank you. Any more questions or comments? Tashi and Krishanu, do you want to comment on anything? Before they go, I just wanted to request कि अगर यहाँ हमारे Zoom में और कोई साथी दूसरे राज्यों से, क्योंकि हमने जैसे 3-4 राज्यों का थोड़ा सुना है, Right. बट अगर और कोई स्टेट के साथी यहाँ पर है और कुछ कहना चाहते हैं वहाँ का, Actually यहाँ पे मैंने शायद शिवलाल को देखा एक बार, अभी वो या इफ यू वांट टू शेयर, बट अच्छा रहेगा कि संक्षिप्त में आपके स्टेट का अगर कुछ आप कहना चाहेंगे. जैसे उत्तर प्रदेश के साथी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, तो यूपी तो एक ऐसा लैब है जिसके बारे में तो सुनना ही चाहेंगे. और तो एंड इनफैक्ट बहुत कठिन परिस्थितियों में यूपी में साथी काम कर भी रहे हैं, वहाँ जो माहौल बहुत अलग है. तो आप कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद आई थिंक वी कैन देन गो टू आवर स्पीकर्स. रितु या रुबीना, आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे साथी निकल गए मुझे लगता है. हाँ. Yeah, we can go back to our speakers maybe. मुझे और states का नहीं यहाँ समझ में आ रहा. I think Tashi wanted to say something. No. I said quite a lot, I think, whatever I said. No, but I think thanks for organizing this करने के लिए, और Poushali for putting this together and holding all of us together and you know keeping the flow of the you know speakers का flow बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
मीरा और NPM साथी ये ऐसा स्पेस क्रिएट करने के लिए और इसको बनाए रखने के लिए इतने सेशंस करते हुए मतलब फ्रीक्वेंटली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बात कि ये जो हम मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, खासकर मुझे लगता है एक समय था शायद मूवमेंट और कम्युनिटी, मूवमेंट बिल्डिंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग वेर बोथ वन एंड सेम, शायद। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अब के जो अनुभव में लगता है कि ये मूवमेंट तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कम्युनिटीज पीछे छूट रहे हैं और एक कम्युनिटी बिल्डिंग पीछे छूट रहा है, लेकिन मूवमेंट्स कहीं ना कहीं जा रहे हैं। मतलब मीडिया में या सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं मूवमेंट्स का मुद्दों का हो रहा है, लेकिन कम्युनिटीज कहीं पीछे जा रहे हैं और कम्युनिटी बिल्डिंग पीछे जा रहा है या नहीं हो रहा है। तो शायद इसके बारे में हम सब लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। बस थैंक यू, धन्यवाद। Krishanu, anything you want to share? Then I'll just do some closing comments. So I Earphones again before I begin. I don't really have anything else to share, but whatever I talked about was largely, so this is also like how my work also is, like, you know, coming from very personal spaces. And that's why I also invite all of us to have these conversations in our personal spaces, is because when we say movement and when we say these things, they seem very big and they seem like, you know, something very large, except I feel it's very personal spaces is where we can start all these conversations and reflections amongst ourselves firstly, then friends, and then these other spaces that we create for ourselves, which we call community, which Tashi also talked about. So definitely community building can only happen in that manner. So yeah, I believe, yeah, that is something we can do. And also community, not to again mean like some kind of a big heterogeneous one, but small islands of us trying to, yeah. So yeah. मुझे लगता है ये कम्युनिटी और मूवमेंट के बाद जहाँ पे शायद हम आज का डिस्कशन रैप कर सकते हैं, मुझे ये भी लगता है कि शायद ये पिछले 2-3 साल का जो माहौल रहा है, जहाँ पे रिप्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और जो पैंडेमिक लॉकडाउन का भी पूरा आइसोलेटेड एक एनवायरनमेंट था, जहाँ पे हम बहुत ही हमारे फैमिली के ऊपर निर्भर हो गए थे या 1-2 फ्रेंड्स के ऊपर निर्भर हो गए थे, वहां से हमारा जो मेंटल हेल्थ का स्थिति बन गया, उससे हम अभी भी जूझ रहे हैं। तो वो भी एक शायद हम सबका थोड़ा सिमिलैरिटी होगा फीलिंग में, कि हम वो बिलोंगिंग टू अ सर्टेन कम्युनिटी ग्रुप को ज्यादा वो पकड़ अभी नहीं लग रहा है हमको, लेकिन वो और भी स्ट्रेंथन करने का बहुत ज्यादा जरूरी लगता है उसको। और खास करके क्योंकि जो मतलब इकोनॉमिक और सोशल जो प्रिकैरिटी भी अब हम देख रहे हैं कम्युनिटी के ऊपर, जो इकोनॉमिक जो डाउनफॉल के साथ साथ कम्युनिटी के लोग जो जुड़े हैं, जो वायलेंस बढ़ गया है, नेटल फैमिली में वायलेंस बढ़ गया है, स्कूल कॉलेज एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो हैरेसमेंट बढ़ गया है, वहां पे भी वो सपोर्ट सिस्टम स्ट्रक्चर्स तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन वो प्रिकैरिटी भी बहुत ज्यादा महसूस हो रहे हैं अभी। और उसका जो चैलेंजेस है वो भी मतलब हर दिन में, हर एक दिन में कुछ ना कुछ 1, 2, 3, 4 यहाँ वहां से खबर आ जाता है, जहाँ पे हमको सपोर्ट सिस्टम तभी के तभी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने का और सपोर्ट सिस्टम बनाने का कोशिश में हम लग जाते हैं। तो ये जो मतलब जो एवरीडे जो चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ता है, खुद का जीवन, फिर कम्युनिटी के साथ काम करने के नाते दूसरों को सपोर्ट देना, वो सभी एक इनफॉर्मल सपोर्ट सिस्टम में ही सीमित है, क्योंकि हमारे पास कुछ फॉर्मल सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। तो मतलब हम शायद एक समय पे शायद पता नहीं 7-8 या 10 साल पहले शायद हमको लगता, किसी और को लगता था कि मूवमेंट शायद आगे बढ़ रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस हो रहे हैं, लेकिन अभी तो एक्चुअली बहुत ही एक क्राइसिस के सिचुएशन में हम पूरा सिचुएटेड है। तो शायद ऐसे ही बातचीत और भी होना चाहिए, और
डेफिनेटली कम्युनिटी के अंदर होना चाहिए और शायद हो भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर शुरू हुआ है। मतलब पिछले 2-3 साल के बाद थोड़ा शुरू हुआ है, लेकिन पता नहीं कि सोशल लेवल पे और पब्लिक लेवल पे कितना वो एक्सचेंज और बातचीत हम कब शुरू कर पाएंगे, और वो शुरू करने का और रास्ते पे उतर के मोर्चा करने का, डेमोन्स्ट्रेशन करने का जो जगह छूट गया है हमारे हाथ से, क्योंकि स्टेट रिप्रेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे दूसरे कम्युनिटी के साथ और मूवमेंट के लोगों के साथ काम करेंगे, वो भी एक बहुत चैलेंज है हमारे सामने। तो शायद हम इसी बात पे आज का सेशन क्लोज करें यहाँ पे। अगर किसी को कुछ कहना है, अगर मीरा तुमको कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट। And if Cat also wants. Amman, as Krishanu has raised their hand. Yeah, Krishanu. Okay, Krishanu. Yeah. No, I was also going to invite Meera only to say something, and also like say thank you from my end to have organized this and to have called me here. It was really lovely to hear everybody. Yeah, Meera, please. Okay, I'll feel free. So yeah, I think बहुत अच्छा सत्र रहा है, and also we did a lot of inward thinking. No, चारों साथियों के बात में वो बात आई थी जो बहुत important है. I mean, at two levels. One is we are constantly, as an external, we are looking at the state towards rights and issues, and which is of course very important, and that struggle has definitely in the past 2 decades, अगर हम देखें तो it has made important strides, but at the same time, I think the need for internal reflection within our spaces also, because I mean, it's very true that at one level, बहुत marginalization है and exclusion है, but at the other level, I think as all the speakers today, including Poushali, mentioned very in a very articulate way, because all these external influences, भले ही हम marginalized and excluded है, but the effects of capitalism, of communism, things, we are not untouched by all of that. So how does one challenge these, and how do we imagine liberation for everyone? सबकी मुक्ति की जो बात है उसको कैसे सोचे समझे, और अभी तक जितने एक प्रकार से गेम्स भी रहे हैं संघर्ष के, क्योंकि बहुत लड़ाई ऑफ कोर्स हुआ है, assertions हुआ है, and one must, I think, give it to all of us, and from the personal to the collective level, कि बहुत अलग-अलग levels पर assertions होते आए हैं, इसलिए इतना तो एक बदलाव आया है, बट बहुत संघर्षों में तो ऐसा होता है कि इट इज मेनी टाइम्स 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड का जो ये है. So we are all, I think, dealing with that, and the larger context in which our struggles are located are very challenging. So how do we both I mean, assert our spaces and rights, but also connect with the macro reality, I think, is a question for all of us as activists, as trans queer people, as collectives, and शायद हम एक बट अच्छी बात है कि आई थिंक हमारे अन्य जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं उनके साथ संवाद के दरवाजे खुले हैं, थोड़ा सॉलिडारिटी का स्कोप बड़ा है. आई वुडंट से कि बहुत बढ़िया है, बड़ा है, बट वो बढ़िया बड़ा से बढ़िया होने में तो अभी लंबा सफर है, एंड आई थिंक देयर इज सो मच मोर that we would really expect of other movements, other sathis also to you know, reach out and connect, and क्योंकि दूर से चीजों को कई बार आप ना जितना नहीं समझ सकते, एक नजदीकी का जो एक रिश्ता बनता है उसके आधार पर बहुत समझने की संभावना है. So let's hope कि we are able to build those really meaningful solidarities and relationships, no, beyond event specific solidarity. Exactly. So, yeah, so thanks to all of you, and to the organizing team, to Poushali for moderating, to Krishanu, Tashi, Grace, and Anandh for you know, your very rich insights. Mala auntie has raised her hand. Yeah. See, I'm not a good speaker like you people. So when Meera asked me to, I couldn't talk much. So one thing I want to say is, when I started working with this community, I never thought, you know, during my lifetime, I will hear all these things.
right? This judgment will come, this act will come. I never thought of that. But fortunately, that act has come, judgment has come. Now in Telugu, they'll say, no, unless until you go and ask mom, even she will not give you food, right? In Telugu, they'll say, that in that way, we'll have to go to the governments. We'll have to go and take all our rights, because legally we got right? So we have full right to go and question all these people. That's what we started here in Telangana. How fast we are going to get it, we don't know. But we are all working together. Meera Sangamitra, then Tashi, Rachna, we are all working together with the government. All of us should do in all states. We'll have to go, we'll have to know, to fight for it. We got all rights. We'll have to put it before them. We'll get it from them. And we can make, this community to live with dignity and in a safe place. First point, we'll have to start from schools. How many dropouts are happening at school level? That is most important. We'll have to go to schools. We are planning to do that. Tashi, we are all planning to do that. If we stop that, dropouts, we can bring more educated children from these communities. So let us work with government. Will let us grab all our rights for our children. Thank you so much. You people are doing great jobs. All of you youngsters. Thank you. Thank you, Mala Aunty. Just to briefly mention, Mala Aunty is someone who in Telangana, I think all of us in Telangana, of course, know of her. She's someone who's constantly, also as a parent of a trans identified child, and much before that, in fact, has been very much in solidarity with trans and queer struggles in our state. And literally, I mean, 24 hours is just thinking of and trying to figure out how, the human and personhood of trans and queer people and how our lives can be better. So, and I think we definitely need more such parents and supportive parents and allies who can work along with trans and queer people. So thanks to all of them on this occasion. My dream was to start WhatsApp group for our parents in Hyderabad from 2012. All these people knows. I couldn't do that. But now 3 months back, we started a Sweekar Rainbow Parents Group even in Hyderabad with around 8 parents. That is one achievement here. Yeah, great. So yeah, I think we can end the session on that note. Thank you to everyone. Zindabad, Jai Bhim, Thanks a Johar. lot, Meera, and thanks a lot, Kat, who hasn't Of course, yes. actually talked at Kat, all. Amod, everyone. And the entire team. Yeah. Thanks a lot. Bye. Okay, bye. Bye, everyone. Take care.